Good afternoon, everyone. Welcome to HCACT, and both the captains are with us from Trojan Boys, 𝗃𝗏𝗃𝗃 and RHINOS. 𝗃𝗏𝗃𝗃 is with us, and I request 𝗀𝗃𝗃 to please hand over the coin for the toss. H is the call from Ubaid. It's a tails. And the news from the center is that RHINOS has won the toss, and what you have decided on this? We decided to bat. Any particular reason? Because It's like we already had 2 more matches done here, so already 80 overs. So we thought like if we won more deteriorated after 40 overs, we thought like batting first would be a better chance. So it means that you are using this condition. These conditions are very good for batting first. Yeah. Okay, Manikanta, tell me something about the MVL. You have been watching through this MVL cameras, and it's been done by MVL. I think I've been part of this MBL organization for the past 3 seasons. I played that and won the 3 times MBL with the organization. And they did like great job, because I see even my family is able to watch this. And they give a lot of priority, and even the umpiring or organizing, every time they'll be very reactive if there is any issues or so. I'll be pretty happy with the way the tournament is being held. Thanks for that. Okay, Manikanta, have a good day. But it does matter losing a toss in a big match. It does or it does not. Maybe after the result we can say, but we are also decided to bat first. We are having a slightly shorter ball in this side. So that should be a better case to bat first. So they are batting first. So what is your target to restrict them before? And this ground, as I said, this ground is a small ground, so anything less than 140, 150 would be a decent amount. One word for the organizers, MVL. Yeah, I need to add it. So they cover these 3-4 angles which they provide. That actually seems fine if we are when 𝗃𝗏𝗃𝗃 are recorded. So it does add value to our Okay, thank you for speaking with us. Have a good day. And the news from the center is that RHINOS has won the toss, and they decided to bat first. Over to commentary box. Over to Sampath. Nice Friday. Nice.
𝗬𝗃𝗃𝗲𝗃. कंसोलेशन बहुत ज़्यादा Welcome to the live match for HCACT. First ball outside the off stump, plays towards the point fielder and taken a single there for Silver Cup between Trojan Warriors versus Royal Rhinos. Manikantha, captain of Royal Rhinos, has won the toss and decided to bat on this wicket. Pramod B and Raghu are the opening pair, and Ajay Kumar bowling the first over. Ajay 246 matches, 188 wickets, 7.92, and best figures are 4 for 19. Bowled on the leg side, white ball. And Pramod 7 matches, 44 runs, 11. Raghu 229 matches, 2,268 runs, 13.42 average and 104.42 strike rate. And this is a Silver Cup for HCACT. Hyderabad Chartered Accountants Cricket Tournament Season 10. Good running between the wicket for single run. Left and right hand combination for Royal Rhinos. Late cut stroke straight to the third man fielder. Dot ball. 3 balls, 3 runs. Good hit down the ground. Boundary, first boundary of the innings for Royal Rhinos. Nicely played on the onside from Raghu, getting that boundary for his team. Beautiful cover drive and a great fielding by the cover fielder, diving to his right and stopping that ball. Partnership of 8 in 5 balls. They won the toss and they decided to bat first, and definitely they are looking for good runs, something around 180 plus. Straight drive. What a fielding by the bowler Ajay. Definitely saving 4 runs for his team. After completion of first over, score is 8 without loss. Royal Rhinos. Right arm fast bowler Harsha. Correction Faizan. 252 runs, 267 wickets, 7.40 economic, and best figures are for him are 5 for 34, and he would like to repeat this best performance in this match. Faizan.
And some change over there. Harsha has come to bowl 359 matches, 417 wickets, 7.68 economy, and nicely played on the onside. Raghu connecting well, back-to-back boundaries for him. That was really timed well. Welcoming the bowler with the boundary. Raghu moves to 10 runs in 5 balls. Clean ball through the gates. End swinger from Harsha. What a revenge from him. First wicket. Breakthrough. And what a bowler he is. Through the gates. That was really bowled well. On the good length. And getting some in swing. Dislodging the wickets. Harsha. Next batsman, Raghu departs for 10 runs. Could see in the replay. A moment there, and what a ball that was. Dislodging, hitting to the bells through the gates. That was really bowled well from Harsha. What treat to watch. Getting some in swing here. Look at the batsman looking to play on the offside. The ball hits the inside of the bat and it went straight to the mid-off fielder. This is really a good swing bowling from Harsha. Cover drive. Oh, there was a chance of run out. If the fielder was collected that ball, it would have been a run out there. Outside the off stump, player missed dot ball. New batsman 𝗬𝗃𝗃𝗃. 7 matches, 26. 2. Oh, another good delivery. Another good delivery through the gates. Last time was onto the stumps, and this one was over the stumps. 2 overs, 14 for 1.
2 overs 14 for 1, Royal Rhinos. New bowler Faizan. Straight to the middle of field of dot ball. .3 overs 15 for 1. Good start from Faizan. Only 1 run from 4 balls. Leg by runs for the batting team. Oh, plain miss outside the off stump. Dot ball. It's an over 3 overs 16 for 1. Royal Rhinos. Played down the ground. .31 for 2 Royal Rhinos, and someone should to look to capitalize the power play over here. If you capitalize the power play over, then you could make a huge score on this wicket.
But the thing is that they lost 1 wicket. That's what they're taking some time. Oh, that was a really good hit. Sorry, correction. Looking for a good hit. Dot ball from Harsha. Again, in swing delivery from him. This is really a pure bowling from him. Getting swing. Dot ball looking to tap it on the off seam to convert the strike, to rotate the strike. Harsha, 1.4 overs, conceded 8 runs, 1 wicket for him. After being hit by boundary, in the next ball he got a wicket. That was really a good sight. One bounce to the mid-off fielder. Quick runs between the wicket. Into the gap. Boundary. Yes, that was really timed well on the onside. Pramod. With that, 4 score moves to 23 for 1. $25 for 1 after 4.3 overs. Royal Rhinos. Dead ball. Good ball. 𝗵𝗡 wicket for fielding side here. Nicely bowled Faizan, picking his first wicket and the second wicket of the match. 25 for 2 Royal Rhinos. Looking to play on the onside. A cross-batted stroke from Vijay Tota. The ball hitting the pad in front of the wicket. Plumb as given by the state umpire. That is clear. Plumb in front of the wicket.
After completion of 5 hours, score is 27 for 2. Down the leg side. Wide ball. And good running between the wickets. Howell ball. Swing and miss, hitting the pad outside the leg stump. Dot ball. Pramod B looking for a big hit down the ground. Another wide down the leg side. Boundary. Wide plus boundary. One over Royal Rhinos. Partnership of 10 runs in 3 balls just because of that extra runs behind the stumps. Dot ball. Back to the bowler. Dot ball.
steering it towards the gully fielder and taking a quick single between the wickets. Welcome into the commentary box, Sam. Thank you very much, Yudhvir. Well, so far you have enjoyed this match. Match between Royal Rhinos and Trojan Warriors. I think after losing those two quick wickets, they are building a partnership here, which is going well at the moment. 16 runs from just 10 deliveries. We've just witnessed a boundary where the fielder tried his best. More runs, and that could be 4 as well. And yes, it is. Well, there could be a boundary check. No, that's a good team effort. Now the runs are coming everywhere. First one straight down the ground, second one to the left leg side, and this one towards the offside. Is even though it's not a boundary, but they are getting runs from every part of the ground. for 2 after 6.5 overs. क्या इस मुकाबले में भी हमें बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, सैम? क्योंकि 2 ही विकेट गए हैं, रन बन चुके हैं, 140 स्कोर बता रहा है. अगर 140 को ठहर कर थोड़ा और अच्छे रन बनाए, 160 प्लस हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं. आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? I don't know what to say about the predictions because first two matches. Well, talking about the predictions, that resulted in a wicket. A slow flighted delivery. Yorker misread the length. And Pramod swings his bat through the offside and the ball goes through the gate straight onto the off stump. Pramod gone for 11 after facing 16 deliveries. That's a big over, 11 runs and a wicket. Maybe I think he just got carried away with those no boundaries and getting some runs. Because until then, the partnership was good. And Royal Rhinos lost their third wicket for 48 runs after 7 overs.
बिल्कुल विनोद कुमार की बढ़िया गेंद थी, जिस प्रकार से आपने कहा। एक ओवर में 11 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने लिए हैं। Next batter, Adil. Adil Wain, 34 runs in 4 matches. I'm sure he may have played a lot more cricket than what these numbers show. The right-handed batter replacing the left-hander. 𝗀𝗡𝗃𝗃 into the attack now. The awful toss, the first signs of aggression in this over itself. Money continues to keep that aggression, wants to get runs as quickly as possible. He moves on to 14 from just 9 deliveries. डॉट बॉल, रन लिया नहीं वहाँ पे, अच्छा कॉल था वहाँ पे एक्चुअली। इसकी रन्स आपको रिस्क में डाल सकते हैं। जब आप बड़े हिट लगाने की काबिलियत रखते हैं ऐसे, तो बड़े हिट लगाइए। That goes very high and very long as well. The first maximum of the innings. What a shot. Overpitched, outside the off stump, good enough width. Gives him the license to go. Played it very late. A gentle push to the third man and gets a single. Last ball of the over. Single of the last ball. Cuts it to deep point. Single to Adil, and he will keep the strike as well. Royal Rhinos 58 for 3 after 8 overs. That's the maximum, the first maximum of the innings from Adil. Tossed up delivery. Punches it down the ground to T-Pex recover. Vinod Kumar continues. It's coming from around the wicket. Well, this one he drags straight down the ground.
सुन Good over so far. Not any big hits, not any loose deliveries. 3 singles from 4 deliveries. This time he tries big, but there's a man in the deep. Nine over 63 for 3 रॉयल राइनोस। एक अच्छी सी साझेदारी सैम, इस साझेदारी को आगे बढ़ानी होगी। कम से कम 15-16 ओवर तक इस दोनों बैट्समैन को विकेट संभाल कर रखनी होगी रन्स बनाते हुए, और उस 2 बैट्समैन से एक बैट्समैन को स्ट्राइक लेनी होगी ताकि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बन सके राइनोस के लिए, क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी ली है। और जब भी टीम बल्लेबाजी लेती है यही सोचती है कि 180 कम से कम 180 वो बनाए ताकि सेकेंड इनिंग में उन्हें डिफेंड करने में आसानी हो। And you're right. And if anyone who wants to take the charge, put pressure on the gas pedal, I think that would be Money. He's naturally an aggressive player. He has hit a couple of boundaries already. But after fall of the previous wicket, I think even he has slowed down a bit. He's also playing very carefully. Both these batters are rotating the strike well. क्या बिल्कुल आप स्ट्राइक लेते हैं तो दबाव थोड़ा सा कम होता है, मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में आपको मदद मिलती है अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं। और अभी जैसे कि विकेट गिरी है, थोड़ा सा रन रेट भी गिरेगा, फिर से वापसी करनी होगी इन 2 बल्लेबाजों को। अच्छे से हिट्स लगाने होंगे, 1 2 3 सिंगल, एक बीच में एक बड़ा हिट की कोशिश इस तरह करें। I think that's no ball. ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल साइड स्क्रीन के पास गिरती हुई गेंद। टॉस को मनी ने, जिस प्रकार से आपने कहा है, मुझे लगता है शायद मनी ने आपकी बात सुन ली है। हल्का सा कदमों का इस्तेमाल, नो बॉल वहां पर दिया गया था। चलिए फिर से एक फ्री हिट, इस बार इनसाइड आउट, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। अच्छी रनिंग वहां पर, हल्का सा मिसफील्ड जरूर हुआ था लेकिन बाउंड्री नहीं गई वहां पे। बिल्कुल इसी इंटेंशन के साथ खेल रहे मनी की हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाएंगे। उनका बैटिंग स्टाइल ही, जिस प्रकार से आपने कहा है सैम, बहुत एग्रेसिव है। Yes, Yudhvir. And we were talking about the partnership, and this one gone up to 26 from just 17 deliveries. हो, बढ़िया हिट है। बिल्कुल बाउंड्री की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं, जितना अच्छा कनेक्शन हुआ है आप स्ट्रोक को देखकर बता सकते हैं कि ये 6 रन है। Well, that's gone miles in the air and miles in the distance as well. Adil is only dealing in 6s. 𝗀𝗏 कैप्टन है टीम के, जर्सी नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर।
इस बार स्लॉग स्वीप, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। दो खिलाड़ी जब नजदीक आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की सूरत देखते हैं कि आप रोकेंगे या हम, इसीलिए कहते हैं कि पहले आप में ट्रेन ना निकल जाए। यहाँ पर निकल गई है ट्रेन 4 रन के लिए, क्योंकि दोनों इतने करीब आ गए थे कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ना कोई एक रोकेगा, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए गेंद बीच में से निकलती हुई है 4 रन के लिए। After completion of 10 overs, 85 for 3. And it's time for a short drinks break. कब $86 for 3 after 10.2 overs. 8.32 करंट रन रेट। अगर थोड़ा सा और प्रयास करे तो 10 तक जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर करंट रन रेट मेंटेन किया है रॉयल्स राइनोस ने। प्रोजेक्टेड स्कोर 166 और एक 10 रन जोड़ लीजिए आप, 176 आराम से हो सकता है। इस बार अच्छा कनेक्शन हुआ है, चलिए निकल गई है गेंद 4 रन के लिए। शाम कितनी मधुर आवाज आई थी बैट की। Such a sweet sound of that timbers.
kind of music to my ears. बिल्कुल हर क्रिकेटर के लिए वो म्यूजिक ही है जो दिल को नहीं आत्मा को सुकून देता है. Well, there's a misfield. But Money didn't want to go for the second run. In fact, they just got a break, and I'm sure Trojan Warriors may have thought of some plans on how to take the game forward from here on. They only got 3 wickets in the first half of the game, half of the innings. And they know very well this partnership is going to be crucial and brutal as well if they let them go for another few overs. 11 overs completed, 92 for 3. And I think that's the reason why the skipper is trying to introduce all his options, try all the bowling options to break this partnership. Another bowler, 7th bowler is introduced, 𝗃𝗃𝗃. And he's been greeted with a boundary. चलिए ओवर के पहली गेंद पे अगर चौका आ जाता तो ये समझ लिए कि ये बड़ा ओवर बल्लेबाजी के लिए होने वाला है. चौका आ चुका है, 5 गेंदें अभी बाकी है. Up and over this time towards deep third. Back-to-back boundaries, and 50 partnership comes up. And so does 100 runs on board for Royal Rhinos as well. 100 for 3 in 11.2 overs. चलिए पहली गेंद में अगर चौका है तो बड़ा ओवर, अगर दूसरी गेंद में भी चौका आ जाए तो समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा ओवर आने वाला है. Straight down the ground. Won't be a catch, but only for a single. Pretty hot conditions out there, and these batters don't want to take too many runs and get tired, because they know they are very good strikers of the ball. So take time and hit the ball and get the runs rather than run yourself and make some runs. बिल्कुल टॉस जीतने के बाद कैप्टन मणिकंठा ने भी यही कहा था कि सुबह से 2 मैचेस विकेट पे हो गए थे और कंडीशंस भी बहुत अच्छे हैं. हार्ड मुझे विकेट लग रही है और इस पे हम बैटिंग करना चाहेंगे, और अभी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मणिकंठा. $102 for 3 after 12 overs.
103 for 3 after 12.2 overs, 167 projected score. बिल्कुल कंडीशंस बहुत ही ऑड है वहाँ पर. इस हॉट कंडीशन में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हैदराबाद में थोड़े दिन से फ्रीजिंग कोल्ड चल रहा था. आज सुबह भी हमने देखा थी बहुत हवाएं, बहुत ठंडी थी, लेकिन इस समय बिल्कुल सूरज आसमान पर है. Well, these days, particularly from the past few years, there are too many changes in the weather. It has become so unpredictable. Now you get to feel two seasons in fact, one day during the night it's winter, and during the day at this time it's too hot. It feels like summer. And we have a very special guest in the commentary box, जनाब नवाज. I welcome you into the commentary box. चलिए, आपकी मधुर आवाज़ हम सुनने के लिए बेताब है. आपका स्वागत है. Good evening. And of course, let me tell you, Mr. Nawaz has hit a century just yesterday. Who's in good touch with the cricket, and that's up in the air and goes over the fielder for a maximum. Is it maximum? The umpire wants to check. Okay, it's a boundary check time. Too much width on offer. It goes very high. Well, let's look at it a little closer. I think that falls within the boundary line, just a few inches inside. And Nawaz bhai. Sir, बोलिए. So how are you enjoying your cricket? Good. काफ़ी बढ़िया साझेदारी हो रही है दोनों के बीच. जिस प्रकार से स्कोर बढ़ रहा है, कितना होगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो 150 तो पक्का है, but that may go up to 1. See, at the moment the projected score is showing as 169, so 170, 180 is very much possible. However, just now the skipper Money is retired out. He's gone for 46 from just 27 deliveries. He has hit 6 boundaries and 1 maximum. Now the new batter comes in, 𝗃𝗃𝗃. So I think 175, 180 is good. And what is your take on that? जी, मेरे हिसाब से भी 170, 170 और 180 तो आराम से बनेंगे जिस हिसाब से. वही मेरे हिसाब से भी जिस हिसाब से अभी साझेदारी हो रही थी, अभी तो रिटायर्ड हट हो गए हैं, उसके बाद भी रन बनने के जो रफ्तार है वो रुक नहीं रहा है. तो देखते हैं 180, 170 तो बन पाएंगे मेरे हिसाब से. And in fact, there's a huge confusion, I guess, between long on and long off. In fact, the ball went to long on. The fielder came all the way from long off. And between those two, basically,
I think with that confusion, they let the ball go. Back foot 5. And now, as well, the first 2 matches were very low scoring. And what is the average score that you see on this ground? And how does the conditions change the pitch, during the day as the day progresses? सुबह के मैच में जैसा देखेंगे आप, ड्यू होता है अभी यूजुअली इस दिनों में, उस हिसाब से टॉस जीत के वो लोग अच्छा डिसीजन लिए थे. And this is a massive hit. What a shot that was. Well. Adil loves to deal in maximums. In fact, he opened his account with a maximum. And all 3 were very well hit. They come from the middle of the bat. बिल्कुल वेंकट, आपने सही बोला था कि कैसे रूप बदलती है विकेट सुबह, दोपहर और शाम, क्योंकि सुबह सुबह ठंड ज़्यादा होती है, ड्यू फैक्टर ज़्यादा होता है और हल्की सी नमी रहती है विकेट में, और जैसे जैसे धूप उसमें पड़ती है थोड़ा सा रोलिंग के बाद वो घट होना शुरू होती है, और हमने देखा है कि उसी वजह से शायद थोड़ा सा बैट पे नहीं आती है बॉल, और उसके बाद अभी की आप यहाँ से देख सकते हैं कि विकेट चमक रही है, और जब विकेट चमकती है तो ये समझ लीजिए कि बहुत हार्ड हो चुकी है, अच्छी रोल्ड हो चुकी है, विकेट गिरा है यहाँ पर, एक अच्छी गेंद वहाँ पर डाली थी रंगनाथ प्रसाद ने. Well, the aggression is contagious. You're quite new into the middle, Venkata. Faced only 4 deliveries, made 5 runs, but he sees basically his partner on the other end, who has hit a maximum of the last ball of the previous over, and he wanted to continue that momentum. He went on for it and succumbed to that deadly Yorker. और एवरेज स्कोर भी आपने पूछा था, और नवाज जो ऑफिशियल है उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया था कि इस विकेट में 180 to 200, एवरेज स्कोर 180 इस ग्राउंड में एवरेज अमूमन देखा गया है, क्योंकि इस ग्राउंड में भी मैं बहुत खेल चुका हूँ. And talking about the dew factor in the morning, yes, even though the pitch is covered with the covers during the night, there's some dew, it gets into the pitch, the track, even after rolling in the first few overs, or rather pretty much in the first match, or at least the first innings, there would be dew on the outside. And I think that plays a major role as well. Bowlers don't get much grip on the ball. जनरली लोग सोचते हैं कि जब कवर डालने के बाद ड्यू अंदर नहीं जाएगी, लेकिन आप नॉर्मल भी कवर आप डालते हैं तो अंदर स्वेटिंग होती है कवर के भीतर, तो उससे जो विकेट होते हैं वो नम होता है, और इस बार बड़ा हिट वहां पर, बढ़िया हिट. And I think when a batsman like Adil is in the middle, doesn't matter what the conditions are. और जब हम ग्राउंड का प्रिपरेशन करते थे सैम, तो कहीं पे ग्रास कम आती थी, तो वहाँ क्या करते थे, कवर डाल के छोड़ देते थे हम लोग 3 या 4 दिन. तो होता है, नमी होती है, लोग सोचते हैं कि ऊपर से याद है, इस बार बढ़िया फ्लिक, मिल सकते हैं रन. चलिए, 2 फील्डर के बीच में से ट्रेन निकल गई है. And this is the third instance that I remember, at least in the past few overs. पहले आप इतनी भी नजाकत मत दिखाइए हुजूर कि मैच से हाथ धोना पड़े. क्या करें, नवाबी शहर से, हैदराबाद से थोड़ी नवाबी तो रहेगी. झुकना
हैदराबादी नहीं जानते, थोड़ा सा प्रॉब्लम है झुकने में. Well, this could be trouble. Now he's safe. I didn't carry too long on fielder. Well, Adil is striking at 183.33. Has already hit 4 boundaries and अच्छी गेंद लास्ट मोमेंट में चेक किया बैट्समैन ने स्ट्रोक को. ऐसा लगा कि इनिशियल एक बड़े हिट के लिए जाना चाहते, देखा जैसे स्टंप्स गेंद पर है और निकल जाने वाली है, उसे आखिरी मोमेंट पे रोका. 15 overs 135 for 5 और प्रोजेक्टेड स्कोर चलिए 180 यहाँ से बता रहा है, क्योंकि करंट रन रेट हल्का सा ऊपर गया है 9.00. the last 5 crucial overs. Both the teams have equal chances to make their presence shown very well, because one batter in the middle at the moment, very destructive, was in a very good form, hitting sixes like a piece of cake. 𝗪𝗚, if he continues to stay for the rest of the innings, even 200 is possible. हर्षा, हल्का सा चेंज ऑफ पेस वहां पे देखने को मिला हर्षा की ओर से, और जब नया गेंद डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया इन स्विंगर. पहली विकेट इस मुकाबले की हर्षा ने ली थी, एक बाउंड्री जड़ने के बाद उनके ओवर के बाद दूसरी गेंद पे विकेट लेते हुए, और इस बार देखिए हल्का सा गति में परिवर्तन और डॉट बॉल. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर आदिल पूरे 20 ओवर खेल गए तो 200 मिल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोक ऐसे लग सकते हैं. And it looked so easy, so simple for him. Look at that. Let's look at the replay. It looked so effortless. बिल्कुल एफर्टलेस 50 रन यहाँ पर पूरे करते हुए आदिल. He opens his account with a 6 and reaches 50 with a 6. Back-to-back sixes. बिल्कुल आप कुछ कह रहे थे, एफर्टलेस. Absolutely, look at that. Even we didn't get a chance to look at the replay as well. The ball took the aerial route, went like a flight. Very short time. बिल्कुल देखिए एडजस्टमेंट किया था वहां पे आदिल ने, गेंद हल्की सी गिरी थी और थोड़ी नीचे रही थी, वहां पे रुककर फिर उस स्ट्रोक को फिनिश किया था. बहुत ही अच्छा हिट आदिल की ओर से. टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली तो स्ट्रांग है ही है, मेंटली और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है बल्लेबाज. Flighted delivery. I think played it a little early. बिल्कुल अच्छे रिसीव किया हर्षा ने वहां पर. चाह रहे यही थे कि बल्लेबाज से कोई गलती हो और एक विकेट उन्हें मिले. पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहते हैं. Down the track, good use of the feet. Loves to take the aerial route, and that is giving him fruitful results. 150 up for Royal Rhinos. 155 for 5 after completion of 16 overs. And that was a huge,
huge over 20 runs from it. And Adil hit 3 sixes. Well, suddenly the projected score moved up to 194 from 180 in the previous over. This is what I was talking about. If Adil continues to stay, if he stays for long, you'll get to see many more maximums and a very good total on board. That's a mistimed shot. Gives him a single. That brings Adil back on strike. बिल्कुल प्रेडिक्ट करना यहाँ से मुश्किल हो जा रहा है जिस प्रकार से आदिल बल्लेबाजी कर रहे हैं. मैक्सिमम पर मैक्सिमम, मैक्सिमम पर मैक्सिमम. That could be close. Yes, it was close to the fielder, but Over the fence. well said. Maximum number 8. Viewers, if you're watching this, don't turn off your phone or lock the phone or take your eyes off from this match as long as Adil is there. The 6 hitting mission is at work. Oh. Look at that. The fielder, in fact, everybody is mere spectators. Maximum number 9. बिल्कुल अगर कोचेस भी अगर इस मुकाबले को कोई देख रहा है तो वो अपने बच्चों स्टूडेंट्स को बता सकता है रिप्ले दिखाकर कि कैसे सिक्सेस मारने चाहिए. आपको तेज गेंद पर कैसे सिक्सेस मारने चाहिए, अगर आपको धीमी गति से कोई डालता है तो कैसे सिक्सेस मारने चाहिए. बनाकर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि इसे बनाकर मारा था. अच्छी गेंद थी, उसे अच्छा स्ट्रोक लगाने के लिए कहते हैं कि बनाकर मारा था. और यहाँ पर हर सिक्स को बना कर मार रहे हैं आदिल. He's brutal in the middle. Wagon wheel. All those sixes are in front of the square. Those are not some random shots. बिल्कुल सामने की ओर खेले हुए हिट और कितनी आसानी से बनाया. जब भी गेंद जाती है फील्डर कैच के लिए नहीं, गेंद को बाउंड्री के बाहर से लाने के लिए देखता है. जैसे कि ये वाला. Well, he completes or he gets to a double mark figure in hitting sixes. 10 sixes in one innings. सैम, हम लोग मैच कर रहे हैं या हाइलाइट्स की कमेंट्री कर रहे हैं? मैच में There's no difference, I guess. At the moment, there's no difference between highlights and the match because, well, that was kind of teasing the fielder. Is there a chance, slightest chance for me? Can I? Oh my God, will I get this? But actually, at the end, he just keeps watching, going it over his head. ना बल्कि वही फील्डर पूरी 11 की 11 टीम उसी इंतजार में थी कि अब पकड़ लिया जाए, अब पकड़ लो, अब पकड़ा जाए वो कैच. लेकिन आदिल चिड़ा कर 6 रन बना रहे हैं.
181 for 5 in 17 overs. And now even Jagdish wants to contribute. He hits a boundary. जगदीश ने कहा आप सीधे मार रहे तो मैं ऑफ साइड पे ही मार लेता हूं, बहरहाल रन तो बना लूंगा। 18 गेंदों में 62 रन्स की पार्टनरशिप सैम किसी भी टीम की कमर तोड़ सकती है। इस बार इनसाइड आउट। There's a fielder only for a single. And talking about the previous over, and literally we were talking about the highlights, because 26 runs made in that previous overs in 6 deliveries. नो, हाथ से लगकर छूटी है। हो क्या रहा है? लोग मौके ढूंढते हैं और आपने मौका छोड़ दिया। I think we need to see that once again. I think it went over. लॉफ्ट किया उसे बॉलर के ऊपर से। और देखिए आदिल की बल्लेबाजी जो होती है वो डाउन द ग्राउंड होती है। कोशिश ये होती है कि दो फील्डर्स के ऊपर से या बीच से खेले स्ट्रोक। और जब आप स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड रन बनाने में काबिलियत रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। और सीधे बल्ले से अगर आप खेल रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपकी बैटिंग क्वालिटी बहुत हाई है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी वहां पर आदिल की। The last ball of the over, Adil on strike. Well, it's not the last one. They need to re-ball that. In fact, Sidhu has to do it. It's a wide and an extra run. Takes it in the gap. 4 runs. The runs continue to flow. 200 up for Royal Rhinos in 18 overs. और सैम एक समय था हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या 160 बना पाएंगे या 165 बना पाएंगे या 170 बना पाएंगे। और अभी देखिए 200 बन चुके हैं और 2 ओवर बाकी है। And that's the beauty of this game. Anything could change at any point of time. When it's your day, you will hit sixes like this. Usually, you see these kind of numbers, like 12 sixes actually. चलिए 100 up in style. बिल्कुल बैट की आवाज आती बता रही है कि ये कितना बड़ा बल्लेबाज है। ऑन योर स्क्रीन आदिल, जर्सी नंबर 23, 13 रन, 13 बिग सिक्सेस। सैम पूरे मैच में नहीं होता है, इनके अकेले के बना दिए इन्होंने। बिल्कुल जैसे वो लॉफ्ट स्ट्रोक खेला था उस आवाज से ही समझ चुके थे कि ये गेंद भी गई है बाहर। There's one man standing in between Trojan warriors and their dream of lifting this cup. This man alone made half of the runs.
Is there a chance? No. बिल्कुल फील्डर ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे कि वो इस बार पकड़ ही लेंगे, और ये पहली बार नहीं, कई बार हुआ है कि बिल्कुल उनके ऊपर से निकल जाती है। Maximum number 14. And nowhere it looked like he's just swinging his bat just like in the air. Every shot is proper cricketing shot that he's playing, and it's all about his timing. Yes, he's tall, naturally he has that energy, capability, but using that to time it every single time, in fact 14 times in this innings, 14 sixes. That's incredible, beyond at this level of cricket, I would say. राइटली सेड सैम, आसान नहीं होता है उतनी टाइमिंग से और उतने बार रिपीट करना। बिल्कुल एक बड़ा ही खिलाड़ी कर सकता है ये। So even if you look at international kind of players, be it in IPL or any other international game, some of the sixes when the players play, they come down the track. It shows that they are using so much power. For example, like this shot that he played, Jagdish, he swung the bat so much harder. It didn't time it well though. That's why it went through the ground, too long gone for a single. Whereas while Adil playing that shot, that looks effortless. Well, 215 comes up for the loss of 5 wickets in 19 overs. Last 6 balls to go, 6 legal balls to be delivered. इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग सिक्स मारना चाहते हैं, बच्चे खासकर बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, वो आदिल की बैटिंग ज़रूर खेलें, क्योंकि जिस प्रकार से पिछला स्ट्रोक हमने देखा था, जगदीश की ओर से ताकत लगाया था, उन्हें पूरा स्विंग किया था, वही आप आदिल को देखिए, वेट कर रहे हैं, गेंद को लास्ट मोमेंट पर देख रहे हैं और सिर्फ लॉफ्ट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, इसलिए एफर्टलेस हमें वो स्ट्रोक नज़र आ रहा है। बहुत ही बड़े एग्जीक्यूशन हम कह सकते हैं। And it's almost like there's no much variation in the bowling as well. No short of a length deliveries for Adil. No bowler is trying to trouble the batter here, because almost all the shots that he played straight over, long off, long on, and a couple into the mid wicket as well, but none of them up to his waist level or a bouncer. It almost looked like a batting practice for him. बिल्कुल होता ये है कि जब आपको एक सिक्स लग जाता है, एक 6 रन आपको जड़ दिया जाता है, तो आपकी मानसिकता यही होती है कि इसका विकेट तो मैं लूंगा, और वो खुन्नस कहिए या वो एग्रेशन कहिए, आप विकेट्स पे गेंद डालते हैं विकेट लेने के लिए, और आदिल डाउन द ग्राउंड उसी प्रकार के गेंद का इंतजार करते हैं और डाउन द ग्राउंड 6 रन लगा देते हैं। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर भी हमने बॉल नहीं देखी, ताकि स्क्वायर कट हमने देखा ही नहीं आदिल की ओर से। हर स्ट्रोक जिन्होंने खेला है बना कर मारा है। इस बार भी देखिए, इस बार कैच मिल सकता है, एंड मिल गई, बड़ी विकेट मिली है। चलिए लास्ट 4 गेंदें बची है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता सैम, और 4 छक्के मार लेते, and that would be too much for the batting side and to the opponents to come back. Well, 107 of 41, standing ovation for Adil Wayne. Such a destructive batting, ruthless, no respect for the bowlers at all. It's pure batsmanship. Look at the celebrations from his teammates. Adil gone for 107, and he has hit only two boundaries and 14 sixes.
with a strike rate of 260.98. He really made a difference. And there was a very good catch by Obed South. बिल्कुल सेलिब्रेशन तो बनता है और मैं कहूँगा कि ये आधा सेलिब्रेशन है. अगर उनकी टीम जीत जाती है तो मैन ऑफ द मैच और बड़े बड़े कप्स ट्रॉफीज उन्हें मिलने वाले हैं. बाकी का सेलिब्रेशन तब होगा. I think half the work is already done for them when they set a 200 plus score. That gives them a psychological advantage. Swing and a miss. Well, you can hear so much silence. As long as Adil was there was noise everywhere, from the dugout, from the commentary box. I'll try to play a reverse shot, misses, and here's Plum in front of wicket of the last ball of the innings. Kuragula Ajay Kumar gets 2 wickets in the last over. A very, very good last over. Conceded only 4 runs and got 2 wickets. And Royal Rhinos, after winning the toss, elected to bat first, and they've put a humongous total of 219, all thanks to that one man, the centurion, 𝗪𝗪𝗀𝗪 in the middle order. Good contributions from the openers. Raghu 10 of 6, Pramod 11 of 16, and the skipper Mani 46 of 27, and then came the 6-hitting machine, 𝗪𝗪𝗀𝗪 107 of 41, and at the end Jagdish 15 of 13. Overall 20 extras have been given, 17 wides, 1 no ball, 1 leg by, and 1 byes. And in the bowling card, at the end Ajay got a couple of wickets. Faizan, Harsha, Vinod, and Ranganath, everyone got a wicket each. Well, a huge target for Trojan Warriors. When they come to bat, they need to get 220 runs in 120 deliveries to win this Silver Cup. Back on the grind, I ain't really with relaxing. Whole 20s in the pack, talking
get that, gotta 𝗃𝗏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 𝗃
Back on the grind, I ain't really with relaxing. On 20s in the pack, talking taxes. Been cooking in the kitchen since back
चलिए दूसरी इनिंग में स्वागत है। मैं युद्धवीर सिंह और मेरे साथ है सैम। सैम आ जाइए, कैसा लगता है? बड़ा रन चेस के लिए वहां पर टीम उतरी है। आदिल के सदमे से वो लोग वापस बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं? I think after that destructive innings from Adil, anybody needs some time to come out of that trauma. But they also know if the other team has made 219, 220, even they can make. There's a possibility. It's just that they need to be sensible enough, mindful enough of those loose balls, give importance to their wickets. Just don't go for chances where you can lose your wicket. बिल्कुल सही कहा साहब आपने। चलिए एक बंदा अगर 100 नहीं बना सकता तो बांट कर 2-3 लोग 50-50 बना सकते हैं या 4 लोग बना सकते हैं, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब तुझ में है ताकत तो हिम्मत हम में क्यों नहीं? And that needs to be there. That kind of attitude should be showcased in the middle. Well, some discussions are going on. Not sure why the delay is. आपने मेरे शेर कंप्लीट होने नहीं दिया। I'm really sorry. तुझ में है ताकत तो हिम्मत हम में भी कम नहीं। अगर तू है तो हम भी किसी से कम नहीं। वाह वाह, क्या बात है। देखिए ये जोश, ये हिम्मत रखनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स। यहाँ पे शुरुआत हुई है मैक्सिमम की। इसी की तो मैं बात कर रहा था। तू है तो हम किसी से कम नहीं, हम में भी दम है, हम किसी से कम नहीं। इस प्रकार का रिएक्शन, इस प्रकार का एटीट्यूड हमें चाहिए। सामने वाला अगर शेर है तो हमें सवा शेर बनना ही चाहिए। Well, that was a very good over until then. Only 1 run conceded in the first 5 deliveries. And that good over is spoiled by that maximum of the last delivery. And what a shot from Hussain. 𝗃𝗏𝗃𝗲 and Obed Saud are the openers for Trojan Warriors. Pramod bowled the first over. ऑन दी आप खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की ओर से गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। चलिए मिल गई है बाउंड्री। तेरी आवाज को आवाज तो हमारी आवाज को लोग दहाड़ कहते हैं। बिल्कुल देखिए चीर फाड़ करने का ये हौसला अफजाई वाला शेर होना चाहिए। थोड़ा सा जुनून के बगैर जिंदगी बेकार है। आप देख सकते हैं अक्सर राघवेंद्र पे बड़े बड़े टारगेट चेस होते हैं
क्योंकि विकेट बहुत हार्ड हो चुका है अभी, जिस तरह आपने बताया कि शाइन लग रही है, चमक रही है, उस हिसाब से तो चेज हो सकता है। बस कंटिन्यू करना चाहिए इस तरह का आक्रामक बल्लेबाजी। तो 220 कोई बड़ी बात नहीं है इस ग्राउंड पर। That was a back foot punch down the ground. We took long on for 4. बिल्कुल अच्छा हिट, 15 रन वहां पर, अच्छी शुरुआत। उबैद सऊद कैप्टन आए हैं बल्लेबाजी के लिए रिफाकत हुसैन के साथ। वन बाउंस कीपर के पास जाती हुई गेंद, रघु की गेंदबाजी, 3 गेंदों में 8 रन दिए हैं। बिल्कुल हो सकता है एक बड़ा स्कोर एक बड़े बैट्समैन के लिए, एक अगर सिंगल बैट्समैन रन बनाना जाए सैम तो ये एक बड़ा स्कोर लगता है, लेकिन अगर हम टीम में डिस्ट्रीब्यूट करें थोड़े थोड़े रन तो बिल्कुल ये छोटा टारगेट मुझे लगेगा। और मैं यही चाहता हूं कि इस टीम के बल्लेबाज अपने टीम के लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे और इस मुकाबले को जीते। देखिए इस प्रकार से पैक ऑफ लेंथ गेंद थी, अच्छी गेंद थी, उसे कट किया, थर्ड मैन की ओर चौका पाया। Three fielders standing very close to each other. He's able to find that gap, that narrow gap between those two fielders. Third man and back to point. बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है। देखेंगे आप इस तरीके का स्टार्ट मिलेगा पावर प्ले में 60 से 70 रन आप बनाएंगे तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान होगा टारगेट चेस करने के लिए। आप क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, करंट और रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट की जो दूरी है अगर उसे आप पावर प्ले में कम कर लेंगे या ज्यादा रन, जिस प्रकार से नवाज ने आपको बताया कि एक अच्छी सी बल्लेबाजी यहाँ पर चाहिए, ताबड़तोड़ ज्यादा रन बन जाएंगे तो लेटर इनिंग्स के ओवर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 9-10 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, जिस तरह से अभी वाइड एक्स्ट्रा रन मिले हैं ये भी मिलते रहेंगे तो पीछे आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत ही आसान होगा 9-10 को आप रोटेट करने के लिए। And it's not only about the runs that they make. If they make some runs in the power play, and if the top order contributes, 2-3 batters contribute and put some runs, even after the power play, if the run rate is 12 or 12 plus, it gives a sense of confidence to the other batters who come in the middle order. They know, okay, it's a batting track. The other team made 200, so we can also make, even our top order made some runs, so we can also get some runs. That confidence will be there and they will get going. Correct, absolutely correct. इस बार अच्छा हिट, पुल किया बैकफुट पर। सैम एफर्टलेस, जिस प्रकार से आप कहते हैं एफर्टलेस, ये बार भी एफर्टलेस। Just need the timing. There's good enough pace on the ball. And these days you get to have proper care, particularly the bats that they get between. It's like a weapon in your hand. You know how to use it properly, you'll get fruitful results. मैं तो उसे मैजिक स्टिक कहता हूं सैम। जादू की छड़ी है आपके हाथ में, बस इधर घुमाइए उधर घुमाइए। बिल्कुल जादुई बल्लेबाजी करिए जिस प्रकार से होता है, टाइमिंग परफेक्ट रखिए और आपको रन मिलेंगे। काबिलियत की कोई कमी नहीं है आपके पास। जादू की छड़ी तो सब घुमाते हैं सर, बस समझदार वो है जो सही समय पे सही दिशा दिखाए। बिल्कुल उसे ही जादूगर कहते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, एक अच्छी शुरुआत मैं मानूंगा क्योंकि आप एक बड़ा रन चेज कर रहे हैं। निडरता के साथ यहां पर बल्लेबाजी की शुरुआत की है, बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए उबैद और हुसैन। रुका हूं मैं, थमा नहीं हूं मैं, रुका हूं मैं, थमा नहीं हूं मैं, हवा नहीं मैं तूफान हूं।
अभी तो आगाज हुआ है, अभी देखना आगे क्या क्या होगा। Well, that was a huge over, the previous one. 20 runs came in there. With a couple of wides included. Overall, 4 boundaries were hit. Well, more runs. Extra runs. This is what everybody calls freebies. Everybody loves freebies except the bowling team. दो ओवर की समाप्ति के बाद 33 ट्रोजन वॉरियर्स की एक ठोस शुरुआत। करंट रन रेट 16.50। नवाज, इस गति से अगर ये लोग बल्लेबाजी करेंगे तो बिल्कुल मैं समझता हूँ 15 ओवर के पहले अगर विकेट नहीं खोते हैं तो जीत सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआत मिली है 15 और 16 ओवर के बीच में ख़त्म हो सकता है, बट यहाँ पर बहुत समझदारी से एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिस तरीके से एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर के बीच में जो साझेदारी चल रही है उसमें बॉलर की लाइन बिगड़ रही है। जैसा कि देख रहे हैं आप, वाइट आ रहा है, वाइट +4 आ रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी रहती है। आप इंडियन टीम्स में भी हमने देखा था सहवाग और गांगुली और सचिन, क्योंकि गेंदबाज की दिशा वहां पर भटकने की कोशिश। इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक और रन के लिए निकल पड़े हैं। रनआउट का मौका, अगर थ्रो सटीक होता, तेज गति से फेंका होता है, स्टंप्स में फेंका होता, शायद हो सकता था, लेकिन एक रन वहां पे कंप्लीट किया। और मैंने देखा अक्सर जिसकी विकेट बॉलर नहीं लेता है उनकी विकेट रनआउट होकर जाती है। बिल्कुल, एक हल्का सा मौका बना था फील्डिंग टीम के लिए, लेकिन जब तक फील्डर समझ पाते हैं कहाँ थ्रो करना, दोनों ने अपना रन कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छी रनिंग हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा तालमेल दोनों के बीच में। 2 ओवर 1 गेंदे और 35 रन। ऐसी शुरुआत तो रॉयल राइनोस ने भी नहीं की थी। हाँ, फिनिश उन्होंने बहुत अच्छा किया था। इनको भी अच्छी शुरुआत और अच्छी फिनिश की जरूरत है ट्रोजन वॉरियर्स को। अक्सर देखा जाता है इस बड़े लक्ष्य का ऐसा पीछा करने के लिए शुरुआत तो बहुत लोग अच्छी करते हैं, बस उसको अंजाम पे ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आगाज तो हुआ है, अब अंजाम की परवाह करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत रन बनाने बाकी है। 184 किसी भी मैच में एक बड़ा स्कोर होता है चेस करने के लिए। 106 गेंदों पर। Well, it's a testing time for the bowlers when there's a right hand, left hand batting combination. And it's also a frustrating time for them when these batters are making some runs. And also when they get boundaries like this, finding the gaps, big chase for the fielder. थैंक यू नवाज, बॉक्स में इतना समय देने के लिए। It's a healthy run rate at the moment, 15.38. Over the infield,
away from the fielder towards deep extra cover this time. Back-to-back boundaries for Obed South. And both these batters are striking at 200. Obed 22 of 11. And Hussain 12 of 16, 12 of 6. Well, another expensive over, 18 runs from it. After 3, Trojan Warriors 45 for no loss. And Yudhvir, I think a change in the bowling attack is needed now. The spin should be introduced because the pacers, the medium pacers, couldn't control the game much into their favor. Well, it should be a no ball. No, it's a wide. सैम आपने क्योंकि जहाँ पर तेज काम नहीं करा वहाँ पे स्पिन को लाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए आपको. हो सकता है मिस टाइम हो जाए, विकेट कैच के रूप में मिल जाए, या स्टंपिंग हो जाए, या एलबीडब्ल्यू मिल जाए. लेकिन यहाँ तो कोशिश करनी चाहिए आपको. अगर ये दो बल्लेबाज 10 ओवर तक खेल गए तो फिर मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा आपको. In the air and taken. चलिए, आपने कहा स्पिन आई है और यहाँ पर विकेट गई है. And that could be the breakthrough. 50 up for Trojan Warriors, and they got the loss their opener as well. Rifat Hussain has gone for 12 after facing 7 deliveries. He has hit 1 boundary and 1 maximum, but played a key role in making a good foundation, creating a good foundation for the rest of the batters to come. या बिल्कुल जिस प्रकार से आपने कहा है कि यहाँ पर चेंज इन द बॉलिंग ने काम कर गया, ब्रेक थ्रू मिल गया है. And SRK, S. Ravi Kishore, has taken a wonderful catch. Well, the first wicket is down. The left-hander replacing a left-hander. 𝗀𝗃𝗃 comes into the middle. 313 runs in 38 matches with a strike rate of just over 100. An average of 16.47. He joins his skipper in the middle. What is important at the moment is not to lose that temperament, that momentum, what they have started. जी हाँ, बिल्कुल करंट रन रेट को गिराना नहीं चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए. आपने बिल्कुल सही कहा. जो दबाव फील्डिंग साइड के ऊपर है उसे बरकरार रखना चाहिए.
चलिए एक विकेट जब गिरता है तो दूसरे को लेकर जाता ही जाता है. It was there in my mind. I was a little skeptical to say whether, I mean, later I don't want people to say commentators curse, so I was holding myself from using that statement. Usually, one wicket gives another. 𝗬𝗃𝗃 comes in and 𝗬𝗃𝗃 goes out after making one run. As clean ball for the second ball that he faced. And 𝗬𝗃𝗃 Ramakrishna, the man of the moment. 2 wickets in this over. This could be the turning point of the game. Maybe a little too early. Oh, huge gap between bat and pad. Well, a fantastic over has come to an end. 7 runs and 2 wickets. 4 overs completed, 52 for 2. Shot. Sam gap पे खेला हुआ खूबसूरत स्ट्रोक फ्रंट फुट पर ऑन द अप एक्स्ट्रा कवर की ओर. बहुत ही अद्भुत स्ट्रोक. And he's off the mark with a boundary. And the moment he played, he knows it's a boundary. He didn't even have to run. Well, now the bowler is under pressure. This is what happens when you're being hit for a boundary of the first ball. I still remember that video clip is there, right? MS Dhoni telling one of his spinners, I think it's Kuldeep Yadav. I don't remember what kind of match it was, an international match. The batter was heading boundaries and sixes. So he bowls a wide. Not wide, but basically slightly away from the batter. So Dhoni says, ऐसे डालेगा तो रख ले भाई. With you as well. ऐसे डालेगा तो रख ले. मतलब है कि डर मत अच्छे डाल. इसका मतलब है कि डर मत खुल के बुदाल गेंदबाजी का रची. And that's up in the air, but in the gap as well. Big chase, but well, all those efforts gone in vain. From the 30-yard circle, he kept on running behind the ball. Even he dives, but couldn't save the boundary. Let's look at that replay.
प्रयास बहुत ही बढ़िया था, प्रयास रोक ही लिया था, गेंद अंदर आई, पैर को लगी, फिर सीमा रेखा के पार गई। तकलीफ होती है इतनी कोशिश करने के बाद, हाथ को लगा पर मुंह को नहीं आया। In fact, this is where you need to slide. Shot. Stands and delivers. It's a very good shot, even though there's a fielder placed. Even if had stopped, even if the fielder has stopped that ball, I would still say that's a very, very good shot. अब बिल्कुल मार के हिले भी नहीं थे, गेंद को देख रहे थे बल्लेबाज। ये देखिए, देखते देखते जा रहे थे, दौड़ नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि मिल जाएगा चौका। आत्मविश्वास से सराबोर वो स्ट्रोक। इस बार भी अच्छा वेट वहां पर गैप में खेला हुआ है। चलिए, इस प्रकार की बल्लेबाजी है और हम लोग बात कर रहे थे जो करंट रन रेट है उसे नीचे मत आने दीजिए। और यहाँ पर देखिए दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फ्लिक किया था ऑफ स्टॉपर से ऑन साइड पर। जान है ये बल्लेबाज में। 70 for 2 after 5 overs, 18 runs from that previous over. Especially those 3 boundaries, hat trick of boundaries back to back. पांच ओवर्स की समाप्ति के बाद 70 रन 2 विकेट के नुकसान में। चलिए, विकेट तो जरूर गिर, लेकिन जो 70 रन वहां पर मौजूद हैं वो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी से मिले हैं। करंट रन रेट 3 पर ओवर, रिक्वायर्ड रन 10 रन। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। विकेट गिरने के बाद दबाव लिया नहीं है दोनों बल्लेबाजों ने, खुलकर बल्लेबाजी की है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बल्लेबाजी की है। मिडऑफ को देखिए कितना क्लोज लगाया गया गेंदबाज के पास, ताकि अगर सीधा लॉफ्ट हो तो कैच के चांसेस बन जाए वहां पर। वेल बॉल। हमेशा यॉर्कर सरप्राइज करता है बल्लेबाज को सैम। यॉर्कर ही होता है। Not easy to play the Yorkers. Well, there's a mix-up. Chance of a run out at the non-striker's end, but the throw, a terrible throw. Well, you need to do better than that. Especially towards a batter who's striking at 300. You cannot miss on any chance. He was halfway down the pitch. Misfield once again. And 4 once again. जी हाँ, बिल्कुल गेंद को ढूंढ रहे थे। मुझे भी वही लगा। ये दूसरा मौका है जब वो गेंद तक गए लेकिन गेंद पर पाए। Well, he needs to be a step ahead. बिल्कुल आगे निकल कर रोकना चाहे थे, पीछे से गेंद को खींचने की कोशिश की थी। Well faked. Single to square leg. $76 for 2 Trojan Warriors.
बढ़िया स्टॉप लगा, बढ़िया स्टॉप लगी है क्योंकि बहुत तेज गति से खेला हुआ स्ट्रोक था वो. It was hit too hard. I think the bowler was surprised. He didn't expect the ball to come back to him. He just kept his hand in between. And this is a powerful strike. Straight down the ground. Well, none of the fielders seriously attempted to stop the ball. Fielder at long on was actually standing almost straight just beside the side screen. ये वाला बढ़िया हिट है, ये वाला बहुत ही बढ़िया हिट है. And that clears the rope towards a deep mid wicket. और इस ग्राउंड की सबसे लंबी बाउंड्री वही है, हाउस कॉर्नर की ओर. Well, it's time for the boundary check. Even though the umpire has signaled it as maximum, I think now there's some doubt in his mind. I think it bounced after the boundary rope. Well, the fielders have to go to get the ball. And I think it's going to be fun in this innings as well. Absolutely. And look at the way he has hit. Just cleared his front foot.
not too much power, pure timing, very good follow through. बिल्कुल, और हमने देखा था पिछली इनिंग में आदिल ने डाउन द ग्राउंड टारगेट किया और इस बार वेद मिड विकेट की ओर. Venkata is into the attack. And 100 up for Trojan Warriors with the loss of 2 wickets in 8.3 overs. What a chase it is. Well, sloppy misfield. It's pretty casual there. Yes, you do have a huge total, but it's not that huge if you portray this kind of fielding efforts. बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है शायद अजय के लिए वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फील्डर ठहराने चाहिए, मिड विकेट पर और एक क्रॉस कॉर्नर पर, क्योंकि जितने भी रन बनाए उन्होंने ऑन साइड पे ही बनाए हैं. मौका बन सकता है फील्डिंग साइड के लिए. लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग है ट्रोजन वॉरियर्स की ओर से. चलिए प्लेस किया है इसे, फील्डर के पास जाती हुई गेंद. उबेद 9 overs for 6 for 2.
This VS Ramakrishna bowling his last over, the only wicket taker of the side so far. Look at the desperation from the skipper. Ramakrishna broke the partnership. He's the one who got the wickets. Well, in that kind of shot, you should not even try to put yourself in danger. बिल्कुल अपने आप को स्पेक्टेटर्स बना लीजिए अगर इस तरह का स्ट्रोक्स आपके सामने लगता है, बस देखते रहिए, क्योंकि अगर कैच का मौका हो तो हाँ हम कह सकते हैं कि ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जान जोखिम में डालकर आप गेंद को रुकाना नॉट गुड आइडिया. That's up in the air. Catch it is a call. No, dropped. क्योंकि रोप के बाहर जाकर पकड़ी कैच, इसलिए कैच में रेफर हमें दिखा. एक बार चेक करते हैं रिप्ले में. 6 मुझे ऐसे लगा कि फील्डर क्रॉस कर चुके थे बाउंड्री लाइन, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वहां पे 2 फील्डर लगने चाहिए. देखिए बिल्कुल बिल्कुल, And I think कैच that's तो पकड़नी चाहिए थी. कैचिंग प्रैक्टिस हो सकती थी. and 50 up for Ajay Kumar in style with that maximum 54 from just 24 deliveries with 7 boundaries and 3 sixes. And it's 122 for 2. सैम, आपने सोचा था कि ऐसा होगा सेकेंड इनिंग में? क्योंकि जिस प्रकार से पहली इनिंग की बल्लेबाजी हुई थी, 200 प्लस रन गए थे, एक बड़ा स्कोर हमें लग रहा था, लेकिन उस बड़े स्कोर के सामने एक बड़ी सी शुरुआत यहाँ पर ट्रोजन वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने कर दी है. कर दी है तो कर दी है, इसका मतलब जंग अभी बाकी है. Of course, before that war continues, they will take a small break, rethink about their strategies, what to do and what not to, and we'll also take a small break.
Well, 𝗬𝗃𝗏, what a day of cricket that we are witnessing today. First two finals. First one was a low scoring. We thought the second one would be better. It was even lower scoring. And now we thought it could be an average or decent enough match. But this is beating our expectations. First of all, 219 runs in the first innings. That's a humongous total. And after the fall of the wickets, of course, we did wish, we were talking about what the batting team should do. Even after they lose, they should not take their pedal off from that gas. And look at that. Change of sides worked. After 10 overs, Raghu is back to bowl his second over. And the half centurion is gone. Tried to play it on to the onside. Well, he's gone for 55 from 26 deliveries with 7 boundaries and 3 sixes. And the strike rate of 203.7. He has done his part. As we were talking about, everybody should contribute. Rather than one person making a century, 2-3 members making half centuries. And that's what they are showing. एब्सोल्युटली अपना काम कर चुके हैं अजय, लेकिन कुछ और ओवर्स अगर रुक जाते तो बिल्कुल मैच में एक अलग ही रोमांच हमें देखने को मिलता, लेकिन अपना काम कर चुके हैं। आने वाले बल्लेबाजों को जिम्मेदारी संभालनी होगी, रन रेट को गिरने नहीं देना चाहिए अगर वो इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। उबैद सऊद वहां पर मौजूद हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखनी होगी। हल्का सा पुश किया उसे ऑफ स्टंप पर, कवर फील्डर के पास 1 रन के लिए। Vinod Kumar is the new batter. 823 runs in 59 matches for him. Averaging over 18 and strike rate over 107. Well, that's a beautiful shot through covers. बहुत ही अच्छी हिट, बहुत ही अच्छी हिट। And 𝗬𝗏𝗃 continue to keep that pressure on. Is determined to keep that momentum. Immediately, an extra fielder comes into the offside. And there's a thick inside edge and straight to the fielder at third man. A single towards wide long off. 11 overs completed, 126 for 3.
𝗃𝗃𝗃𝗃 is back to bowl his second over. And 𝘂𝗃𝗃, I think Royal Rhinos have come back into the game and they have a high chance to show domination from here on at this moment. What do you think? जी हाँ, बिल्कुल मैच से गए ही नहीं थे, वो मैच में बंधे हुए थे स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग्स। हालांकि 2-3 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं है कि वो मैच से वापस हुए हैं, क्योंकि बड़ा स्कोर था, ऑलरेडी टीम बना रही थी, लेकिन फिर भी मैच में अभी भी है वो। Well bowled and well fielded as well by the bowler. Well, full swing of the bat in the gap for 4. I think so far, sometimes bowlers failed to be disciplined, to bowl in right line and length. They've given several wides, and those wides turned out to be 5 extras as well a couple of times. And then fielders missed a few. And these batters are getting runs like this. The game is still on. बिल्कुल सही कहा हमने, लेकिन उतनी तकलीफ जब नहीं होती जब एक्स्ट्रास में रन जाते हैं, जब मिस फील्ड में रन जाते हैं, क्योंकि मिस फील्ड अगर आप करेंगे तो कभी कैच भी छूट सकता है। और 12 overs 139 for 3 Trojan Warriors, 11.58 required 110.13। अभी भी बराबरी का मुकाबला है सैम। जिस प्रकार से एक मैच हो रहा है, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि आखिरी रन कौन सी टीम बनाएगी, आखिरी विकेट तक कौन ये जीतेगा। And I think this match will go up to the last over. So we may have to wait for the last over, until the last over, to see, to get the results. Oh, opportunity. And that was put down. Raghu coming from over the wicket, a tall man, very difficult chance, a low catch. Well, that's up in the air and taken at the second attempt. Well, somewhere it's written, this wicket is mine. For him, how many instances that you see, you get to see a situation like this, a drop catch, and is gone the very next ball by the same fielder or the bowler. A
fantastic innings, captain's innings, has come to an end. Obed South caught and bowled by Raghu. He's gone for 42 from 33 deliveries with the help of 7 boundaries. Now both new batters are in the middle. This would be interesting to see from here on how the game would turn out to be. जी हाँ बिल्कुल, इस जोड़ी के बाद देखना ये है कि कौन सी जोड़ी विकेट पर ठहरती है और रन रेट को मेंटेन करती है और जीत के लिए प्रयास करती है। आसान नहीं होगा बल्लेबाजी टीम को यहाँ से मैच के लिए जाना, क्योंकि बड़े अच्छे विकेट्स गिरे हैं और सही टाइम पे यहाँ पर विकेट्स लिए हैं राइनोस के गेंदबाजों ने। Still, a good news for them is the required rate still under 11. It's close to 10.5 now. But the concerning part for them would be the number of wickets that they have lost. वन बॉल डॉट बॉल, दोनों नए बैट्समैन क्रीज पर उस गति से रन आएंगे जिस गति से पिछले 2 बल्लेबाज बना रहे थे रन, क्योंकि सेटल बैट्समैन थे। यहां से आकर एकदम बैट चलाना थोड़ा सा मुश्किल। But the new batter who walked in is very experienced, Faison. Played 252 matches. Made close to 1,400 runs. He can be dangerous too. चलिए गैप में खेल दिया है बैकफुट पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर आदित्य की। ये देखकर अच्छा लगा कि दोनों बल्लेबाज बैट चला रहे हैं, गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। Required run rate 11.00 and current run rate is 11.00. 13 overs, 143 for 4, 77 runs in 42 balls. ना मुश्किल है ना नामुमकिन है, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाज दोनों बैटिंग कर रहे हैं या पिछले बल्लेबाज बैटिंग करके गए हैं, बिल्कुल मैच अभी भी बराबरी पे खड़ा है सैम। You're saying balance, but in my point of view, Royal Rhinos have a slightest advantage here. It's not 50-50. If you have to ask me, I would say 51-49. Royal Rhinos. एब्सोल्युटली एक कदम आगे हैं इस मुकाबले में। हाँ, अगर अजय या उबैद होते तो शायद बराबरी का मुकाबला हो सकता था, लेकिन इस समय बिल्कुल एक कदम आगे खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। Slapped it straight to long off. And with every delivery, I would say my percentage of the team have their advantage has been changing, and I would say right now it's 55-45. Down the ground. Well missed opportunity. This is the second, or I would say third genuine opportunity to get a run, or sorry, a wicket. The keeper should have waited. At least after collecting the ball, you need to balance yourself. And that did not happen. And when you make mistakes like that, they could prove to be costly like this.
And what a connection that was. It's a powerful hit. Look at the bat, how high it went. And almost full of the follow through. Big appeal. अपील बताते हैं कि फील्डर्स इस बैट्समैन का विकेट लेना चाहते हैं क्योंकि पिछला जो हिट था वो बहुत ही बड़ा हिट था, बढ़िया हिट था। अगर वैसे हिट्स लगाने की एक काबिलियत रखता है बल्लेबाज विनोद आपकी स्क्रीन पर, तो मैं समझता हूं कि मैच को नजदीक ला सकता है जरूर। And 150 up with that maximum. And this one high in the air, long on, is merely a spectator because it's the second maximum of the over. इसलिए सैम वो अपील जोरदार हुई थी क्योंकि वो विकेट चाहती है फील्डिंग साइड इस बैट्समैन का, और तारीफ करनी चाहिए। 11 गेंदों में 26 रन बिना कोई समय गंवाए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विनोद कुमार। (62 runs in 37 balls. अभी आपका परसेंटेज क्या बता रहा है सैम? I would still say the same, 55-45. Wow, that is incredible. Incredible. Pitched outside leg stump. Nicely flicked. Well, another huge over, 19 runs scored from that. And for the first time, the required run rate has come down to under 10, 9.67 exactly. After 14 overs, Trojan Warriors 162 for 4. Now 58 runs needed from 36 deliveries. SRK is back to bowl a second over. प्लेस किया इसे ऑफ स्टंप पर 1 रन के लिए, और विनोद कुमार को स्ट्राइक देना चाहते थे, वहां पर सिंगल लिया है। और विनोद ने पिछले ओवर में बहुत ही अच्छे हिट्स लगाए थे, तो मैक्सिमम और एक बाउंड्री, उसी प्रकार की बल्लेबाजी इस ओवर में भी करना चाहेंगे। और इसके बाद के ओवर में भी जब तक वो बल्लेबाजी पे रहेंगे हमें स्ट्रोक्स देखने को मिलते ही रहेंगे। चलिए, SRK has come and he made the difference. This is the difference between power hitting and stroke playing. क्या पूरी तरह से चित किया स्लो गेंद में, स्लो वन, बिल्कुल स्टंप्स में डाली हुई गेंद, जल्दी खेल बैठे और विकेट यहां पर मिलता हुआ। मुश्किलें बढ़ती हुई बल्लेबाजी टीम के लिए। Well, he's disappointed with himself. He was very good until there. Made 30 runs from just 13 deliveries, 3 boundaries and 2 sixes. And look at the strike rate, what he had, 230.77. He, in fact, almost scared the bowling side as long as he was there in the middle, Vinod Kumar. And he is sent back by 𝗬𝗃𝗃.
Fifth wicket down for Trojan Warriors, 163 runs on board. Still 57 needed from 34 deliveries. And the new batter is Akshay. यहाँ से मुश्किल होगी राह। मुश्किल है डगर पनगट की, कैसे भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। Wow, 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 wow. That's in the air. Oh, dropped. Well, that could be another 2-wicket over. फिर से एक बार क्रॉस स्ट्रोक वहां पर ऑफ स्टंप के ऊपर से निकलती हुई गेंद पूरी तरह से वापस यहाँ पर करती हुई फील्डिंग साइड राइनोस। अभी परसेंटेज कुछ बड़ा है सैम, 70-30. 70-30 पर आ चुका है। And that's a huge jump from 55 to 70. That's because of the wicket that they managed to get. Fifteen overs, 165 for 5. 55 runs in 30 balls. And look at that run rate. The current and the required run rate has come back to the same, 11 each. However, the difference from first, the current run rate and the required run rate is the number of wickets. They've lost half the side, half the game is over, but you don't have that quality batting coming up. रन आउट की अपील वहां पे की गई थी। वेल बॉल वेल फील्डेड। रघु अपने स्पेल का चौथा ओवर, कंसीडर 31 रन्स, 2 विकेट उन्हें मिले हैं। That's in the air, but safe. Well, more runs, but only a single for 𝗰𝗇𝗃𝗃𝗃. Full toss, pulled. Well, I think the umpire would like to check whether it's a boundary or 6. However, there was definitely an opportunity in the deep. Well, that's one bounce for 4.
Slap through covers. And that's very good running between the wickets. Sixteen overs, 175 for 5. Trojan Warriors required 45 runs in 24 balls. मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. मिल गई है बाउंड्री थर्ड मैन की दिशा में. रन्स और रन्स, और इन्हें चाहिए रन्स. सैम. That's true. 𝗬𝗃𝗃 bowling his third over. Got a wicket in the previous one. He sent the danger man out. He needs to do the magic once again. Well, thick edge. Only for a single. That's 4. Well, 2 boundaries in the over. Overall 10 runs from first 4 deliveries, 2 more to go. The game is still on. It is still on that balance. But naturally, if you look at it, it's perfectly balanced at the moment. What I think is my personal feeling, it's going down the leg side. Well, overthrows an extra run. Every run is valuable. 17 overs, 187 for 5. 33 runs required in 18 balls. 18 बॉल में 33 रन. Current run rate is 11 and required run rate is 11. एक बड़ा ओवर यहाँ से, जी हाँ, 1-2 बड़े ओवर अगर आते हैं तो बिल्कुल वापसी कर जाएगा ट्रोजन वॉरियर्स, क्योंकि विकेट्स अभी भी 5 उनके हाथ पर और कुछ रन यहाँ पर गेंदबाजी टीम को जो इस मैच को आखिरी गेंद तक ले जा सकते हैं. वो ये बहुत अच्छा मूव एक फील्डर को लगाया. पॉइंट फील्डर वहां पे नहीं था इससे पहले. देखिए डबल प्रोडक्शन लिया है, गली भी और डीप पॉइंट भी. इस बार डाउन द ग्राउंड लॉफ किया है, मिस टाइम स्ट्रोक और ये रन आउट का मौका. चल थर्ड अंपायर के पास जाता हूं निर्णय. Well.
Keeper is confident. Well, the turning point of the game. Here it comes. जी हाँ बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं. Well, that's a short run. And a run out. And 𝗀𝗃𝗃, this is something very strange. What is it in this kind of situation? Will they get a run? Or would it be 0 and a बिल्कुल wicket? 0 और विकेट, क्योंकि वहां पर एक शॉर्ट रन है. Absolutely. The run is not completed. So it'll be just a wicket. That should be a wide. You don't have to do anything special at the moment. Stick to basics if you want to win the game. Just bowl in proper line and length. Let the batter take the risk. Let him hit the shots. But you don't make the batter's job easy by giving extras. New batter 𝗪𝗪𝗃𝗃 is off the mark with those couple of runs. He's also a very experienced player. Look at his numbers. Over 4,800 runs in 359 matches. The strike rate of close to 109 and averaging close to 25. Edged. Very well fielded. Nagarjuna, the fielder. Well, that's the fielder. चलिए अभी इससे पहले हिट लगा रहे तो गैप में जा रहे थे और अभी सीधा फील्डर्स के पास. और अगर आप नीचे से खेलेंगे तो बिल्कुल फील्डर के पास जाएंगे. आपको बड़ी हिट लगानी होगी इस मैच में वापसी करने के लिए. अभी नहीं तो कभी नहीं. Last ball of the over and beautifully bowled. Yorker outside the off stump. With that wide Yorker and dot ball, the over completes. And what a good over. Just 5 runs and 1 wicket. 18 overs gone. 192 for 6. And 28 runs required from last 2 overs. जी बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से कहा, राइनोस ने उस विकेट लेकर वहां से टर्निंग ली है इस मुकाबले में, वापसी मैच में वापस की है, वापस ली है इस मुकाबले में. 18 ओवर्स 192 फॉर 6, 12 गेंदों में 28 रन.
𝗬𝗃𝗃𝗃 bowling his last over, and the most important over in a chase, the penultimate over. As they say, this over will give you a fair idea. Absolutely. बहुत ही important होता है. Who has the upper hand? Oh, bowling. Off stump is uprooted. Well, there is no twist in the tail. It's a setback for Trojan warriors. Harsha Sunkara is clean bowled by 𝗬𝗃𝗃𝗃. And look at how far the stump has gone. क्योंकि हमेशा देखते हैं कि बेल्स बिखरते हैं, लेकिन इस बार स्टम्प्स उखड़ते हुए, जिस प्रकार से आपने कहा अप रूटेड, जी हाँ, जड़ से उखाड़ते हुए स्टम्प्स को. अभी आपका परसेंटेज मीटर कितना बता रहा है सैम? 90-10. चलिए, लेकिन अच्छा एक मुकाबला हमें देखने को मिला. बड़ी स्कोरबोर्ड पे बड़ा रन रखा था बैटिंग करते हुए. And if I may ask, what is your equation of percentage of thing? Back-to-back wickets, and this time it's the middle stump. Well, well, well. Manikanta, captain, is happy with that bowling. Captain of Rolls Rhinos. क्योंकि हर एक विकेट कीमती होती है, यहाँ से कोई मौका देना नहीं चाहिए. कोई खिलाड़ी को जमने नहीं दे रहे हैं वहां पर बल्लेबाज. देखिए स्टंप्स पे डाल रहे हैं गेंदबाजी. और किसी Well, भी he's on hat-trick. किसी भी टीम के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत अच्छा दृश्य होता है जब स्टंप्स बिखेरी जाती हैं. हमने देखा था रिएक्शन मणिकंठा का, सेलिब्रेट किया था. Sidhu is a new batter. In fact, Sidhu was the batter who walked in and walked out. He went as a golden duck. Well, you won't get an opportunity like that, getting a hat-trick, but this time he lost the line, bowled a wide down the leg side. New batter is Raghunath Prasad. Big inside edge, and that goes for 4. The game is still on. However, it's still difficult. They only have 2 wickets in hand. जब तक विकेट है या जब तक आखिरी रन हो नहीं जाती हैं, कोशिशें जारी रहेंगी और कोशिशें ही कामयाब होती हैं. मुश्किलों को देखकर डरा नहीं, मुश्किलों से लड़ा जाता है, तभी तो एक बड़ा मुकाम बनाया जाता है. नॉट डायरेक्ट हिट हुई है वहां पर. There is a wicket. रन आउट, डायरेक्ट हिट. आखिरी एक विकेट यहां पे चाहिए राइनोस को. Well, this is a funny story. If you have heard, the people were saying when SRK collected the ball, they were telling him not to throw it. Yes. But when he hits it bullseye, straight onto the stumps, then they praise him. This is what happens everywhere. As long as you're successful, everything is fine. Absolutely.
And if you miss that opportunity, they'll say, why did you do that? We was telling you not to do that. All those things come up, but well, so far so good for Royal Rhinos. "22 needed from 7. It was the last ball of the over. "19 overs completed, 199 for 9. Well, a lot of 9s on the board. Now, 1 wicket is needed for Royal Rhinos. And for Trojan Warriors, 22 runs. "19 overs, 199 for 9, 6 balls, 21 runs. चलिए, बहुत अच्छी वापसी की थी रॉयल राइनोस ने, क्योंकि एक बड़ा मुकाबले में अच्छी शुरुआत यहाँ पे ट्रोजन वॉरियर्स ने की थी और उस शुरुआत को जारी रखा था 16th और 17th ओवर तक। यहाँ पे बैक टू बैक विकेट्स लिए थे। जब भी बल्लेबाज ट्रोजन वॉरियर्स की एक अच्छी पार्टनरशिप करते उसे ब्रेक किया रॉयल्स राइनोस ने और इस मैच में वापसी की पूरी तरीके से। जी हाँ, पूरी तरीके से वापसी की है। In the air, take चलिए, कम ऑन, यहाँ पे जीत हुए रॉयल राइनोस की। एक समय में ऐसा लग रहा था शायद ट्रोजन इस मुकाबले को जीत लेंगे, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी कैचिंग और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला मणिकंठा का। और इस मुकाबले को सैम, They have given a tough fight. They have given a hell of a fight, Trojan Warriors. And what a game it is. What a game we witnessed. The champions of Silver Cup final are Royal Rhinos. Looking at their batting scorecard, openers have given a good start. 𝗀𝗏𝗃𝗃, 42 of 33. In the middle order, Ajay Kumar, 55 of 27. Vinod, 30 of 13. Faizan, 19 of 13. And no much contribution from the lower middle order. Overall, 23 extras have been given. Only 5 bowlers have been used. 𝗬𝗏𝗃𝗃 stands out with 3 wickets. Ramakrishna and Raghu got a couple of wickets each. And at the end, Pramod got the final nail in the coffin. At the end, Royal Rhinos won this match by 20 runs. Stay tuned. We'll be back for the presentation session.
got me that, get that